So first of all, we'll consider for your rotational dynamic students. Of a so-called as rotational motion students. Which object do we consider in order to understand the concept of rotational motion? Listen carefully, students. Suppose if I give you three objects, elastic, plastic, and rigid. I repeat, if I give you elastic body, if I give you a plastic body, and if I give you rigid body, which body you will consider in order to understand rotational motion? And why? What's the reason behind it? Friends, did you get the question? In order to understand rotational motion of a body, I give you three objects, elastic, plastic, and rigid. Which body you will consider in order to understand concept of rotational motion? Absolutely get the correct, rigid body. Students, rigid body होना जरूरी है. Rigid body अगर तुम नहीं लोगे तो क्या होगा? ध्यान से सुनना. अगर rigid body नहीं होगा, then if I take an elastic body, what's going to happen? The body will undergo permanent deformation. If in case if I take a simple example of an elastic body, a clay, students, mud clay. Suppose if I happen to consider mud clay and if I try to give a torque to it, a force to it, what happens? It can change its shape. Or if I happen to go for a plastic body, if I give an external force to it, it can undergo permanent deformation. To understand rotational dynamics, students, we need to consider the object to be what? Rigid object. This is very important. Rotational motion is precisely understood for what kind of object? Rigid object. Okay. In rigid body, students, how are the atoms and molecules? Atoms and molecules are very closely and compactly placed, students. They're very closely and compactly placed. कोई body को अगर तुम rotate करोगे, students, and if you happen to apply an external force to that body, we are doing rotational dynamics, students. We are doing rotational dynamics today. Sir, in the timetable, it was given elasticity. Yeah, but Gandhi sir, he called me up and he told me to go ahead with rotational. Okay, sir. Because it wasn't told to be at all, from me also it was written elasticity only, but they are told about rotational. Okay. Okay, sir. So rotational dynamics, students, we go for rigid body, and in rigid body, the atoms and molecules are held very close to each other. Students, यानी अगर कोई rigid body को तुम external force दोगे rotate करने के लिए, the body will not change its shape, nor even the body can undergo deformation. Students, there is no change in shape, nor even there is deformation if I consider rigid body, students. Is this clear to all of you, students? Why do we go for rigid body now? Students? Okay, yes, now let me move further. The first concept we are speaking about, students, concept of moment of force, which most of you all must have learned it, students. Moment of force. Students, moment of force is simply called as torque. It is pronounced as torque, we consider, and it's abbreviated by a variable called tau. It's a Greek alphabet. So the other name of moment of force I can consider is torque. Students, moment of force, torque is a vector quantity. It's a vector quantity, students. Torque is actually expressed as what? It's R cross F. It's one force into perpendicular distance from the axis of rotation, students. Now listen carefully. When you learn moment of force, students, what exactly the word moment stands for? Students, the word moment stands for what? The word moment stands for turning effect. That means the force, listen carefully, students, the force required in order to give turning effect to a rigid body is called moment of force. I repeat,
The force required in order to give a turning effect to a rigid body is called moment of force. So turning force is called as moment of force, students. Whenever somebody asks you what exactly mean by the term moment, simply we consider as turning effect. Now, how do we go for moment of force? It's a product of R cross F. Students, the product of R cross F. That means the moment of force is the vector product of momentum and the force applied. Students, if we happen to do vectors, if you have done vectors, students, in vectors, do we use dot product or we use cross product, students? If I go for vector products of two vectors, should we use dot product or cross product? What have you learned? Cross. Cross products. Students, cross products is applicable in physics. Listen carefully, students. Cross products in physics is applicable for what kind of topics in physics? What kind of topics in physics? Angular momentum. Yes, circular and rotational. Students, wherever you are trying to learn about, ध्यान से सुनना, जब भी तुम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते होंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ोगे या रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ोगे ना स्टूडेंट्स, वहां पे ही तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है. So now if I happen to go for torque is equal to what? R cross F we consider. How do we go about this? Take a simple example. Now suppose if I happen to go for a rigid rod, think this is the uniform rod. Okay, it's a uniform rigid rod, students. And this rod I'm trying to pivot it at one end. Okay, this is what the end where I have fixed it to the axis. So I can call it as my point of rotation. Students, point O is called point of rotation, pivoted end, turning point. See the three words: point of rotation, pivoted end, turning point. This is a rod we consider. Now to this particular rod, students, suppose I apply force apply karta hu. I'm applying a force. This is the force which is applied. Agreed? Now, if you look at the force which is applied, I'll consider the force to be applied along which axis? Let me see the forces are applied along y axis. So I'll consider J cap. Since the force is applied at point A, its distance from the point of rotation, I can denote it by variable r, and that is a position vector. Student, that's a position vector. What is the position vector? The position vector is along x-axis. What does this r bar stands for? Students, r bar stands for momentum. What does this word moment again stands for? Turning arm. Students, momentum का मतलब क्या हुआ? Turning arm. ये ध्यान में रखना. ये क्या है? Force applied. Everybody carefully look into it. How is the force applied in the momentum? Look at the momentum and the force applied. What is the angle formed between the two? The angle formed between the two is how much? 90 degree. What happens to the torque? The torque is maximum. Look at the rod. How's the rod moving? Pieces of the rod is moving in anti-clockwise direction. As if this is a rod. Look over here. This is a rod. ये है तुम्हारा axis of rotation. Agreed? Exactly same diagram. I'm applying a force. I'm applying a force. I'm applying a force. Then I say the rod is undergoing what kind of motion? Rotational motion. So how is the rod rotating? So the rod is, if I have a top view in this case, it's rotating in anti-clockwise direction. तो अगर ये F y axis पे है, position vector तुम्हारा momentum x axis पे है, तो students इन दोनों का resultant जो होगा, what he called as moment of force, students, that will act along which axis? That will act along positive Z. How do we get this answer? How do we get this answer? Instantly, a student who's wise and smart enough will say, sir, we have learned it in vectors, right hand screw rule. Come back to your vectors, students, right hand screw rule. If I go for I, everybody have learned this part. If I go for right hand screw, I, yes, J and K. Agreed? Look over here, see the momentum. Momentum is along which axis? X axis. So can I say I? Force, the tangential force is acting along which axis? Y axis. So can I say J? I cross J. What is my answer? Can I say my answer will be plus K? If I'm going in anti-clockwise direction, students, I cross J will be plus K. अगर suppose में J cross I होता, तो मेरा torque का direction opposite होता. Now from here, can one conclude? हाँ sir. Moment of force is a vector quantity and it's a cross product. It's a cross product of two vectors. Which are the two vectors? One is the momentum. What is the other name of momentum? We call as the turning arm.
and that one is a force applied. Where is the direction of momentum? Is the momentum is along x-axis? Where exactly the force applied is along y-axis. The resultant of these two will be perpendicular to the plane. Students, perpendicular to the plane and along which axis? Along z-axis. Therefore, R cross F is equal to tau. Hence, when you refer your textbooks or when you refer your book, students, they have given moment of force is defined as the vector product of momentum and the force applied, or moment of force is defined as the product of magnitude of force applied and the perpendicular distance, magnitude of force applied and the perpendicular distance from the axis of rotation. Perpendicular distance from the axis of rotation we consider. Now let us say it's a cross product. Students, when I remove the cross product, what exactly component I'm going to get it? R, F, sin theta, एक vector products. Students, cross product के लिए component क्या use होता है? Is it cos theta or sin theta? Students, what exactly component uses? Is it cos sin theta? Sin theta. तो तुम्हारा torque कभी maximum होगा. Students, when exactly the torque is maximum? When theta is 90 degree, torque is maximum. Agreed? When theta is 0 or 180, torque is minimum, we consider. So torque when theta is 90, torque is maximum, students, we consider. Let us take this in still better way. Listen carefully, students. How do we get this concept of sin theta also? Please, everybody listen carefully. Think as if this is a door. Please, everybody pay attention for this, okay? This is a door and this is a hinge. I want to rotate the door in this manner. Okay? I'm rotating the door. Now listen carefully. ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये है तुम्हारा पॉइंट O, यानी ये जो पॉइंट है वो पॉइंट O हो गया, यहाँ पे आ गया. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, ये पूरा डोर है. स्टूडेंट्स, ये पूरा डोर है. ये पूरे डोर को खोलने के लिए मुझे हैंडल की जरूरत होगी. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, in order to have maximum torque, listen carefully, in order to have maximum torque, that means maximum turning effect of the door. Listen carefully, maximum turning effect of the door. Can you tell me where should be the handle be placed? Where should be the handle be placed? I'm giving you three positions. Should the handle be placed at point 1? Should the handle be placed at point 2? Should the handle be placed at point 3? कहाँ पे हैंडल प्लेस करोगे बताओ? 3. ये डोर को मुझे 3 पे, यानी अगर तुम 3 पे ले गए हो उसका मतलब क्या हुआ? अरे हाँ सर, डिस्टेंस ऑफ द टर्निंग आर्म जितना लंबा होगा, डिस्टेंस ऑफ द टर्निंग आर्म जितना लंबा होगा, टर्निंग इफेक्ट उतना अच्छा होगा. That is why students, handles are placed always at a far distance from the axis of rotation. कुछ समझ में आ रहा है? Axle, students, screw jack होता है गाड़ी को उठाने के लिए. टायर्स वगैरह पंक्चर होता है तो शायद you must have seen somebody. How do they try to repair the tire? They put a jack under the car and they take a rod and they take a longer rod and they go on rotating it so fast. You won't believe the entire car, the car का वो part starts getting lifted against gravity. यानी जितना लंबा turning up उतना better turning effect. यानी can I say moment of force depends on to the momentum? हाँ sir, it depends on the momentum. दूसरी बात, keep the momentum constant, students. Okay, keep the momentum constant, students. Now suppose if I want to apply force, let a small kid apply force and a large kid apply force. Let somebody apply force over here, but there are 3 people who are applying force. Students, 3 people. Everybody listen carefully. First person tries to apply force, listen carefully, at an angle theta, and theta is less than 90. Second person is applying force in this direction, theta 2, and theta 2 is equal to 90. Students, third person is trying to apply force in this direction. Okay, look at the angle, theta 3 greater than 90. Students, listen carefully now. I'm changing a position. I want to open this door. The first person is holding the handle in this manner. See my hand forming an angle of acute angle. That means this theta 1 is less than 90.
Second person is trying to pull it open in this manner. See my hand, exactly perpendicular. Third case, I'm trying to open in this manner. Students, मुझे बताओ, in which case you will have maximum turning effect? If theta 1 is less than 90, theta 1 is equal to theta 2 is equal to 90, or theta 3 is greater than 90. कहाँ पे तुम्हारा दरवाजा Equal to 90. equal to 90? And देखो जैसे तुम equal to 90 बोलोगे, students, now suppose if I happen to give you if I happen to give you values, cos of 90 की value क्या students? What is cos of 90? What is cos of 90, students? 0. What is sin of 90? 1. तो students, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो वहां पे मैं cos थीटा लूंगा एज अ कंपोनेंट या sin थीटा लिखूंगा? बताओ अभी। हाँ स्टूडेंट्स, अभी पता चला कि क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा क्यों आता है? स्टूडेंट्स, अभी पता चला क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर sin थीटा क्यों आता है? क्योंकि sin ऑफ 90 विल गिव मी 1, आई विल हैव मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट। अगर दरवाजा मेरा एंटी क्लॉकवाइज में खुला तो टॉर्क ऊपर की तरफ गया, दरवाजा क्लॉकवाइज हुआ तो टॉर्क नीचे की तरफ गया। दैट्स ऑल। आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या ये क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? Is this clear to all of you all? Yes, sir. And torque is always given by the formula Newton meter, students. Okay, can I erase this part? Can I erase this, students? Yes, sir. Yes, sir. Students, the sign conventions for rotational motion to keep in mind. Anti-clockwise, we consider moments to be positive. Clockwise, the moment should be negative. Do keep this in mind, students. Okay. Now, since we learned about moment of force, students, we go for the next concept as couple. Yes. Can you repeat what you just said? Which one will be negative? I and which said will it. be positive? I said sign conventions. Sign conventions is anti-clockwise moments are considered to be positive and clockwise moments are taken to be negative. Agreed? Is that clear? Means if I want to write, if I say R cross F, my answer will be plus tau. But if I write on F cross R, answer will be minus tau. This is in anti-clockwise direction. This is in clockwise direction. क्या ये clear हुआ? Students, vectors and the component is sin theta. Is this clear, students? Yes, Okay. sir. Now let us go for couple. What does actually couple stands for? Students, couple stands for total moment of force. Total moment of force. With answer सुनना. Couple का मतलब क्या? The word couple itself gives you what? So more than one. That is two. Suppose if I give you a rigid uniform beam. Consider this as my rigid uniform beam, students. AB is a rigid uniform beam, students. ये है इसका center of mass, rigid of beam का. Students, अगर ये beam को मुझे balance करना है, तो where should be my entire weight should be concentrated at center. यानी algebraic sum of total moment of force about the center of mass is equal to 0. Students, अगर algebraic sum of total moment of force about the center of mass for this rod is equal to 0, students, your rod is in static rotational equilibrium. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर ये रॉड AB है और उसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ,
If I say the length is L, where is the center of mass? L/2. एक सिंपल एग्जांपल स्टूडेंट्स, तुम्हारा 15 सेंटीमीटर का स्केल है ना, अगर शायद तुम्हारे कंपास बॉक्स में अगर होगा 15 सेंटीमीटर स्केल तो उसको निकालो बाहर, एंड देन इफ आई टेल यू स्टूडेंट्स बैलेंस करो उसको, तो मुझे बताओ एग्जैक्टली तुम कहाँ पे बैलेंस कर सकोगे? 7.5 सेंटीमीटर पे। तो वैसे ही अगर मुझे इसको बैलेंस करना है तो आई कीप इट एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट। यानी तुम्हारा रॉड ना ही क्लॉकवाइज ना ही एंटी क्लॉकवाइज, इट्स नॉट गोइंग टू गो इनटू क्लॉकवाइज नॉट इवन इन एंटी क्लॉकवाइज। यानी algebraic sum of total moment of force about the center of mass for this uniform rod is equal to 0. What is a rod? The rod is in static rotational equilibrium. क्या ये clear हुआ students? हाँ students, इसको हम बोलते हैं static equilibrium. For example, a beam balance. Two pans are there on either side. Suppose two pans are there and both the pans are empty. Where exactly the beam will be horizontal? अगर सपोज मैंने यहाँ पे 2 किलोग्राम डाल दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, तो मोशन किस तरफ जाएगा? मोशन किस तरफ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। फिर यहाँ पे अगर मैंने 5 किलोग्राम डाल दिया, यहाँ पे 2 किलोग्राम है तो मोशन क्लॉकवाइज। फिर वापस मैं यहाँ पे 3 किलोग्राम डाल दिया, अभी दोनों तरफ 5 हो गया, तो वापस क्या होगा? इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। कुछ समझ में आया स्टूडेंट्स? What exactly static rotational equilibrium means? So when somebody asks you students, what is static rotational equilibrium? What is your answer? When algebraic sum of the total moment of force about the center of mass for a rigid uniform beam is equal to 0, then the beam is in static rotational equilibrium. I've taken such kind of a beam. This is the center of mass. But to this beam, what am I trying to do, students? I'm trying to apply two forces. The answer is two forces. Both the forces should be equal in magnitude, opposite in direction, but not at the center of mass. यानी मैं यहाँ पे कहाँ पे लगा दूं? अभी सोचो, मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया और एक फोर्स यहाँ पे लगाया, देखो two forces. Both these forces, students, are equal in magnitude. Length of the arrow is same, magnitude same. Are they in same direction? No, sir. They are in opposite direction. Are these four forces are acting at the ends of the rod? Yes. Other than the center of mass. मुझे ये बताओ, what kind of motion the rod is going to have? This is what kind of motion the rod is going to have? Your answer will be, sir, the rod Anti-clockwise. Rotational motion. In what direction? It's going to go rotational motion in anti-clockwise direction, students. तो ये क्या हुआ? Total moment of force कहाँ पर ही हुआ? Motion किस तरफ जा रहा है? Anti-clockwise जा रहा है. Now, if somebody asks you, sir, can you find out the total moment of force? Of course, that means total torque. Students, total torque. Then we can say torque with respect to the axis of rotation, if I consider as That's clockwise, right? point. Yes. Sir, it's clockwise. Sorry, sir. Clockwise. Yes, it is. sir. It's clockwise motion. It's clockwise motion. Very sorry. It's clockwise. Okay. So torque with respect to at point A about point O, and torque we consider B about point O, and B we consider. See, this is one force, and this is the perpendicular distance. This becomes my momentum. So now can I say the net torque will be equal to how much? What is the net torque? You'll say, sir, it's one force. It is one force into length OA plus force length OB. Can I remove F common? Length OA plus length OB. What is that becoming? Length AB. And that becomes my formula for couple. So students, what is the formula for couple? Couple is again one force. But look at the length. Students, is this length is a distance between point of rotation and application of force? No. AB is a distance between the force applied. That is why, students, this AB is called couple arm. Previously, when I told you about moment of force R cross F, students, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था? इसको हमने नाम दे दिया था moment arm. Students, do take care when you're solving problems. अगर मोमेंट ऑफ फोर्स के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं तो मोमेंटम आएगा. मोमेंटम का मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. दैट मींस दिस बिकम्स योर टर्निंग आर्म. व्हाट इज कपल आर्म? Couple arm is the distance between the application of two forces.
Over here also the unit is Newton meter. Over here also is unit Newton meter. Sign conventions exactly same. If I'm going anti-clockwise direction, torque will be positive. If I'm going clockwise direction, torque will be negative. Sorry, torque will be negative. Likewise, if I'm going in the clockwise direction, what is the couple? The total moment of force I consider will be negative. If I'm going in the anti-clockwise direction, the couple will be considered to be positive. Is this clear to all of you? Friends, is that clear? Can I erase it? Clear, sir. Okay. After the concept of moment of force and couple students, the next concept I try to put about how exactly these linear and rotational dynamics play a role, students. Okay, how does linear and rotational dynamics play a role, students? Listen carefully. Think as if, suppose if I happen to consider an object. Suppose if I say an object is said to rotate about its own axis. Okay, think as if it's a rigid sphere. This rigid sphere is said to rotate about its own axis. And this is the axis of rotation. Now, if I say that the object is rotating with a constant angular velocity, what do you call this as? Angular velocity. Students, when the rigid body undergoes a rotational motion, so can you tell me what about its constituent particles? तो तुरंत बोलेगा सर इसके constituent particles are going to perform UCM. Hello students, ये जो body है ये एक rigid body है. Rigid body के अंदर how the masses are very closely and compactly placed. Suppose कोई मैंने एक mass यहाँ पे लिया A, दूसरा mass यहाँ पे लिया B, तीसरा mass यहाँ पे लिया C, चौथा mass मैंने यहाँ पे लिया D. अगर ये पूरा body rotate हो रहा है तो can I say B is set to rotate about the same axis? Point C is also set to rotate about the same axis. Point D also is set to rotate about the same axis, students. So can I say what kind of motion B, C, D are performing? Uniform circular motion. But what about point A? Point A is on the axis, always at rest. Students, अगर तुम देखोगे ना point B axis के नजदीक है. Suppose अगर मैं एक imaginary line draw करता हूँ, the answer is no, students. See, I'm drawing an imaginary line. I'm drawing another imaginary line. I'm drawing the third imaginary line. Students, how are all these imaginary lines? All these imaginary lines, students, are parallel to the axis of rotation. Are all parallel to the axis of rotation. मुझे ये बताओ students, जब ये पूरा body rotate करेगा and B, C, D performs uniform circular motion, मुझे बताओ students, किसका speed सबसे greater होगा? बताओ. Speed of B, D या C, किसका speed greater होगा? तो तुरंत बोलेगा कोई students, sir, point C is at a very far distance. Yes, absolutely correct, Kirti. Sir, point C is at a very far distance. So now if I happen to go for it, sir, अगर ये radius बढ़ता है, अगर radius बढ़ेगा तो उसका speed ज़्यादा होगा. D का radius उससे कम तो speed उससे कम. B का radius उससे कम तो सबसे कम. सबसे least velocity किसकी है? A की है, and that is equal to 0. How do we get this relation? This relation is simply V is equal to R omega, students.
What does omega stands for? Angular velocity. The entire body is going to go with constant angular velocity. But what about the constant particles? The constant particles are going to perform uniform circular motion. And can I say your V depends on to R? V is directly proportional to radius. क्या ये clear हुआ? जिसका radius ज़्यादा, उसका velocity ज़्यादा. And very important, those who are far away, they're getting a maximum force. In that case, we consider that means the velocity at that instant, it's tangential. It's going to go very high velocity, we consider. So now if I try to, the answer is now suppose if I try to take any plane, listen carefully students, any plane. Okay, think as if I'm taking this as a plane. Okay, ye part. And I'm drawing it separately. So this becomes my axis of rotation. Okay, this is point C, I'll consider. This is my circular path. This is center O. So can I say this becomes my position vector R bar? And friends, ये हुआ position vector R bar. यहाँ पे tangential कौन सा होगा? सर अगर suppose body को अगर जाना है तो tangentially जा सकता है, because it has maximum high velocity. So can I say इस direction में क्या होगा? सर इस direction में displacement होगा. What is displacement upon time? Velocity होगा. What is velocity upon time? Acceleration tangential होगा. What is mass into acceleration tangential? Force tangential होगा. Will the body will possess linear momentum? Yes, linear momentum भी होगा. यानी स्टूडेंट्स देखो सारे linear terms कौन से axis पे act हो रहे हैं? Y axis. स्टूडेंट्स कुछ समझ में आ रहा है? ये सारे tangential terms हैं. X axis पे क्या act हो रहा है? X axis पे क्या act हो रहा है? सर X axis पे position vector act हो रहा है. Now, अगर सारे linear terms इस तरफ act हो रहा है, position vector इस तरफ act हो रहा है, ध्यान से देखना students, और ये particle anti-clockwise move हो रहा है, तो students what about the angular terms? Angular term किस तरफ जाएंगे? Angular term किस तरफ जाएंगे? So using right hand screw rule, thumb is pointing upwards, anti-clockwise, thumb is pointing upwards. If linear displacement is along y-axis, then angular displacement is along positive z-axis. Displacement upon time is linear velocity. Angular displacement upon time is angular velocity. Linear velocity upon time is acceleration. Angular velocity upon time is angular acceleration. Tangential force, moment of force. Linear momentum, angular momentum. Students, ये सारे कौन से terms हैं? Rotational terms. ये सारे कौन से terms हैं? Linear terms, linear motion. Now suppose अगर तुम ध्यान से देखो students, तो सारे vectors देखो. How are all the vectors? ध्यान से देखो. ये देखो, ये तुम्हारा y-axis. अगर ये y-axis को मैं shift करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा center पे. तुम्हारा position vector इस तरफ जा रहा है. Agreed? How are they? Mutually perpendicular. Look at my z-axis. Are they mutually perpendicular? Are they mutually perpendicular? Yes. Are you getting it? This is how we consider the cross product would be considered. Now I can get cross products for several relation. Students, मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ, अगर डांस देखना स्टूडेंट्स, मुझे V चाहिए, डांस से ना मुझे V का आंसर चाहिए. Students, so V का आंसर in anti-clockwise direction. What is the correct way of writing it? Is it omega cross R is correct way to write down, or R cross omega has to be written the correct for anti-clockwise? फिर दूसरा, tangential acceleration, students, R cross alpha is the correct way to write down. Yeah, alpha cross R is the correct way to write down. Then if I consider angular momentum, is R cross P is the correct way to write down? Yeah, P cross R is the correct way to write down. This torque we consider is R cross F is the correct way to write down. Yeah, F cross R is the correct way to write down. Now can you tell me? तो तुम बोलोगे सर, ध्यान से देखना students. Again we go for IJK.
Everybody listen carefully, students. I, J, K. Suppose if I write an omega bar cross R bar, students, omega is along with which axis? Fast. Omega is along which axis? Z axis. So can I say ये होगा K cap cross? R bar is acting along which axis? X axis. Students, what is K cross I? K cross I. K cross I. Is it minus J or plus J? Anticlockwise. Plus Plus J. प्लस J. और J पे कौन सा एक्सिस है? सर J पे लीनियर वेलोसिटीज ऐड कर रहा है. देखो J कैप, I कैप, K कैप. यानी ये करेक्ट रिलेशन है. अगर मैंने स्टूडेंट्स R क्रॉस ओमेगा लिखा होता तो मेरा ये आंसर होता माइनस V. क्या ये समझ में आया सबको? yes sir. स्टूडेंट्स तुम लोग ने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है आगे, वेक्टर प्रोडक्ट्स के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है और वहां पे कितने फॉर्मूलाज लर्न किए? स्टूडेंट्स आई कैन चैलेंज यू मस्ट हैव लर्नड only one formula as torque is equal to R cross F. But now when you do rotational motion, see so many formulas I'm getting in terms of cross products. सारों में sin theta, sin theta, sin theta, sin theta आएगा. सिर्फ तुम्हें ये जज करना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. अभी देखो यहाँ पे R cross alpha. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, प्लीज पे अटेंशन. R cross alpha. Everybody. मुझे बताओ R कौन से एक्सिस पे? I. I. Alpha कौन से एक्सिस पे? K. Z. Students, what is I cross K? Minus J. Minus J. Which connects this becomes minus alpha cross R. क्या होगा? पॉजिटिव में आएगा. यानी ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ये क्लॉकवाइज मोशन हुआ. यहाँ पे ये क्लॉकवाइज मोशन हुआ और ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ. क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या ये चीज क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? I'm making you to write down the correct vector notation, students. And very simple. Anti-clockwise, positive, clockwise, negative. सामने देखो ना, मैंने L का फॉर्मूला दिया है. L का फॉर्मूला दो तरीके से कोई स्टूडेंट्स लिखेगा. एक लिखेगा R क्रॉस P, P क्रॉस R. उसका मतलब क्या? देखो सोचते हैं R क्रॉस P. सर R पोजिशन वेक्टर इज I कैप. P लीनियर मोमेंटम इज J कैप. उसका मतलब स्टूडेंट सर आप पूछ रहे हो I क्रॉस J. अगर मैं I क्रॉस J जाता हूँ तो मेरा आंसर K में आना चाहिए प्लस K. क्या मेरा एंगुलर मोमेंटम A कैप में? सर A कैप में है तो ये मोशन किस तरफ होगा? क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज? सर ये होगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज. लेकिन वही मैंने P क्रॉस R डाल दिया तो मेरा आंसर माइनस L में आएगा. तो उसका मतलब द मोशन इज इन क्लॉकवाइज. दैट इज रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज इन क्लॉकवाइज. यहाँ पे रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज. इज दिस क्लियर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू ऑल? See for Yes, that reason I classified. देखो ना मैंने सारे टर्म्स को क्लासिफाई कर दिया. अगर ये पूरा बॉडी, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर ये पूरा बॉडी रोटेट करता है तो व्हाट अबाउट द डिफरेंट वेरिएबल्स इन अ गिवन प्लेन? तो देखो एक प्लेन को मैंने उठा के सामने डाल दिया. सारे लीनियर इस तरफ जा रहे हैं, सारे एंगुलर जेड पे हो गए. एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव जेड, क्लॉकवाइज हो गए तो नेगेटिव जेड. बस. अब यहाँ पे देखो आर क्रॉस एफ. आर पोजीशन वेक्टर कौन से एक्सिस पे? आई कैप. एफ जे कैप. Friends, what is I cross J? Plus K. Is my torque acting along plus K? अरे हाँ सर plus K. ये कौन से डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज. वही अगर मैं F क्रॉस R लिखूंगा तो मेरा आंसर किस में आएगा? माइनस टाउ. ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा? क्लॉकवाइज. Are these clear, students? Vector notations. Students. So can you explain the second one again? This one. Yes sir. Tangential acceleration is what? That's when a body undergoes linear displacement. Students, what is displacement upon time? Linear velocity or tangential velocity. What is tangential velocity per unit time? Tangential acceleration. What is mass into tangential acceleration? Tangential force. What is mass into linear velocity? Linear momentum, that is tangential.
These are all linear terms. For example, students ध्यान से सुनना, अगर कोई मैंने stone दिया है और stone को अगर मैंने धागे से बांधा है और उसको मैं revolve कर रहा हूँ, है ना, ये circular motion हो गया स्टूडेंट्स। भले हमारे चैप्टर रोटेशनल है, हेलो, पूरा बॉडी रोटेट कर रहा है, लेकिन उसके कंस्टेंट पार्टिकल्स तो सर्कुलर परफॉर्म करेगी नहीं, कर रहा है ना। सपोज अगर मैं तुम्हें स्पिनिंग टॉप देता हूँ, एक भंवरा देता हूँ स्पिनिंग टॉप, ओके, और टॉप विच इज रोटेटिंग, उसी टॉप स्पिनिंग टॉप के ऊपर you try to put a small sticker of red color. When the entire top is rotating, what about that sticker? The red sticker is performing circular motion. इसके सारे लीनियर टर्म्स आ गए, ये सारे लीनियर टर्म्स, ये सारे एंगुलर टर्म्स, क्योंकि मोशन इज एन एंटी क्लॉकवाइज। तो वही अगर मैंने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिया, तो टेंजेंशियल अगर मैं सपोज r क्रॉस अल्फा लिखता हूँ इन दिस केस, तो r कौन से एक्सिस पे, i कैप, अल्फा j cap we consider, sorry, alpha is k cap we consider. So what is I cross k? See, alpha is along k. What is I cross k? I cross k will be minus j. So tangential acceleration will be negative. वही अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए, in that case, so alpha cross r we consider, that's tangential acceleration. Is this clear? Sir, Yes, can sir. you repeat what's written on the tangential? Linear displacement, that is linear displacement, linear velocity, linear acceleration called tangential acceleration, tangential force, and linear momentum. Exactly analog by analog. अगर ये linear displacement है तो ये angular displacement, ये linear velocity है तो ये angular velocity, ये linear momentum है तो ये angular momentum, ये linear या tangential acceleration है तो ये angular acceleration, ये tangential force है तो ये rotational force, torque. And these are the mathematical relations of that. Clear? Yes, sir. Can I erase this, students? Students, can I erase this? Can I erase this, students? And I'm writing what? Students, clear? Shall I move ahead? Yes, sir. With answering students, okay? Please pay attention. These are all imaginary line parallel to the given answer, okay? Suppose अगर यहाँ पे मैं point D लिया है मैंने, students, यहाँ पे मैं point E लेता हूँ, यहाँ पे मैं point F लेता हूँ, मुझे बताओ students, D, E, F, when the entire body is performing rotational motion, students, what about D, E, F are performing? What kind of motion D, E, F are performing? What will be your answer? Uniform circular motion. It's one of the constant particle ना, पूरा rigid body है, तो ये उसका particle. For example, Earth, अगर Earth पूरा rotate हो रहा है, तो what about Mumbai? Mumbai is performing what? Circular motion about the same axis. Students, is it clear, students? Students? Yes. DEF, we consider, DEF, we consider, all of them will have what? Students, their linear terms will be exactly the same. Hello,
जो जो लीनियर वेलोसिटी से d जा रहा है उसी लीनियर वेलोसिटी से e भी जाएगा, उसी लीनियर वेलोसिटी से f, क्योंकि सारा का डिस्टेंस सेम है। लेकिन अगर तुम d e f और c से कंपेयर करोगे तो ऑफ कोर्स इसके लीनियर टर्म्स इनसे अलग होंगे, लेकिन सारों के एंगुलर टर्म्स क्या होंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो समझ में आ रहा है? भले लीनियर टर्म्स सारे कंस्टेंट पार्टिकल्स के अलग है, लेकिन उनके जो एंगुलर टर्म्स है they will all the time remain constant for a body performing rotational motion about a fixed axis with constant angular velocity. This is called as pure rotation. For example, omega. Students, can you tell me what is omega of Earth? चलो कोई बता सकता है what is omega of Earth? Is Earth spheroidal? Yes. Is it rotating? Yes. It's rotating within gravitation. It's rotating about its own axis. What is omega of Earth? Sir, omega of Earth will be equal to 2 pi by t, because you said angular velocity is theta upon time. अगर पूरा Earth rotate होता है तो 360 degrees upon time taken for one rotation. What is the time taken for one rotation? This is 6.28. Time taken for one rotation. Earth का one rotation 24 hours. 24 hours is how much? 86,400 seconds. The numerator आएगा radian, denominator आएगा second. Can you tell me what is the angular velocity of Earth? 7.26 into 10 raised to minus 5 radian per second. And students, this is the constant value. ये constant value है. सोचो अर्थ रोटेट हो रहा है स्टूडेंट्स, अर्थ का पूरा एक रोटेशन होने को 24 घंटे लगते हैं. one day corresponds to how many seconds? 86,400 seconds. What is omega? Theta upon time. अगर अर्थ एक पूरा रोटेशन करता है तो कितना डिग्री घूमता है वो? 360 डिग्रीज. 360 डिग्रीज मींस कैन आई से 2 पाई रेडियंस, इसलिए मेरा यूनिट रेडियन में आया. टाइम टेकन 86,400 सेकेंड्स. 2 पाई को कैन आई राउंड 6.28, यस 2 into 3.14. अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 7.26 into 10 raised to minus 5 रेडियन पर सेकेंड. यानी सोचा है अर्थ रोटेट हो रहा है, but do you feel we are stationed on the earth's surface? Students, hello, earth is rotating with what angular velocity? Even right now where you are sitting in your home is revolving around the same central axis with what angular velocity? Do you feel it's noticeable to you? तुम्हें इफेक्ट उसका फीलिंग लग रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, फीलिंग नहीं है. अगर बाय चांस अर्थ का रोटेशन स्पीड बढ़ जाएगा ना, द प्रेजेंट वैल्यू 17 टाइम्स द प्रेजेंट वैल्यू अगर वो बढ़ जाएगा तो देखो फिर तुम्हें फील होना शुरू हो जाएगा. एग्जैक्टली एज इफ यू आर अ मेरी गो राउंड. जब तक तुम मेरी गो राउंड का ये एक्सिस है स्टूडेंट्स, ये रॉड है और ये एक्सिस है. तुम यहाँ पे हो स्टूडेंट्स, ये मेरी गो राउंड का रॉड है, ये रॉड है और ये एक्सिस है और मेरी गो राउंड घूम रहा है. एट प्रेजेंट तुम यहाँ पे हो स्टूडेंट्स, यू आर ओवर हियर एंड दिस इज द एक्सिस. और ये मेरी गो राउंड स्टूडेंट्स, ये मेरी गो राउंड बहुत धीरे से घूम रहा है. तुम्हें फील ही नहीं हो रहा है, 10⁻⁵ सेकेंड. लेकिन जब भी ये मेरी गो राउंड बहुत फास्ट रोटेट करेगा तो will you go radially inwards or will you go radially outwards? कहाँ पे जाओगे? Will you be thrown towards the center of the earth or will you be thrown away from the center of the earth? When the speed increases, Away. then what is the answer? Will be thrown away. यानी उस टाइम पे कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? सेंट्रीफ्यूगल. यानी एट प्रेजेंट अगर बॉडी को रोटेट होता है तो उस टाइम पे कौन सा फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस है? सेंट्रीपेटल फोर्स है. A centrally seeking force, radially inward force, we call as a real force, and this is what most of the students must have done in laws of motion. Students must have learned in laws of motion जब भी classification किया होगा, real force and pseudo force. So real forces में person must have told you about centripetal force, a radially inward force. Is this clear?
Can I now erase it? This can I erase now? Okay, students. Now to make your things more easier, we try to go for the variables which is used in rotational dynamics in comparison to your linear motion students. That's why students, you have two kind of kinematics we consider. One is linear kinematics. And the one is rotational. First, let us understand the variables. The answers are students. This will help you out. This will help you out to understand your chapter much more better and to solve problems of the students. Suppose if this is linear, this is simply considered linear motion. Suppose if a body is going along a straight path, a car traveling along a straight road. Okay. Sir, Yes. sir, can you write little bit of bigger size because it's very blur? Okay. It's blurred. Now, students. Yes, actually, I think from my end or what, I don't know, but it's getting blurred. Okay, fine. This is linear and this is rotational. That's clear? Yes, sir. Okay. Linear can then suppose if I happen to go for linear displacement, which is in meter. So students, यहाँ पे होगा angular displacement, which is in radian. Students, rate at which displacement takes place becomes linear velocity, meter per second. So students, angular velocity is what? Rate at which angular displacement takes place. That is radian second inverse. It goes exactly analog. ये है तुम्हारा स्टूडेंट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट. इस क्या नाम देते तुम? लीनियर डिस्प्लेसमेंट. ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉल्ड angular displacement, students, omega. Now when I say rate of change of velocity, what does that we call? Acceleration. Meter second square inverse. Exactly identical. Rate of change of angular velocity, students, is called angular acceleration. Alpha. What is its unit? ये है meter second square inverse, radian second square inverse. What do you call this as? Angular acceleration. This is how you can keep in mind, students. Now suppose if I happen to go for ये हुआ तुम्हारा linear force, तो ये हुआ moment of force. अगर मैं पूछूं mass is a measure of inertia, the answer is no, students. Mass is the measure of inertia. Mass is a measure of inertia for what kind of motion? Translational motion. Students, very important now. I'm coming to an important point. Then students, what is the inertia related to rotational motion? That becomes moment of inertia. And that is capital I. Students, the inertia offered for turning effect. Students, the inertia offered for a body undergoing turning effect is called moment of inertia, and the inertia offered for a body to undergo translation motion is called mass.
स्टूडेंट्स ये समझ में आया, ये मास यहाँ पे किलोग्राम में होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या स्टूडेंट्स? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली डिफाइंड एज algebraic sum of product of mass of each constituent particles into square of the distance of that particular particle we consider. From where? From the axis of rotation. Students, moment of inertia for a rigid rotating body is defined as, suppose if I happen to go for a disk, let me take a disk, a 5 rupee coin. Chances are a 5 rupee coin. Is it a rigid body? Yes, sir, it's a rigid body. Is this the center of mass of this rigid body? Yes. Is this your axis of rotation? Yes. Can I have constituent particles? Yes, it's a rigid body. Masses are very closely packed. लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, एक मास मैंने यहाँ पे लिया m1, m2, m3, mn, distance r1, r2, r3, rn. जब ये पूरा बॉडी रोटेट करेगा तो कैन आई से कंस्टेंट पार्टिकल्स आल्सो रोटेटिंग, सो कैन आई से mi ri square, where I stands for any first particle to I stands for nth particle, and that is moment of inertia. And moment of inertia is simply considered a scalar part of it. It's algebraic sum of mi ri square. Its unit we consider as what? Mass, kilogram, square of the distance, meter square. क्या ये clear हुआ students? हाँ students? Yes. यानी ये मतलब क्या है स्टूडेंट्स? ये एक सिंपल मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, एक ध्यान से सुनते हैं प्लीज स्टूडेंट्स। सपोज अगर मैं एक मोटे इंसान को और एक पतले इंसान को भागने के लिए बोलूं, तो मुझे बताओ which fellow will have large amount of inertness? That means if the body is at rest, will tend to maintain the same state, or if the body is in motion, will tend to maintain the same state. Of course, greater the mass, greater is the inertia. Yani heavier mass offers inertness. Students, heavier mass will offer inertness. But this relation, this goes for what? For translation. वही concept यहाँ पे देखो, वही concept यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, वही concept यहाँ पे देखो। Suppose अगर मैं एक sphere लेता हूँ जिसका mass 2 किलोग्राम है, same volume students, same volume, but now suppose if I happen to consider the mass is 10 kilogram, this is 5 kilogram, this is axis, students, कहाँ पे तुम्हें ज्यादा टॉर्क देना पड़ेगा for it to rotate? अगर मुझे ये दोनों बॉडी ए और बॉडी बी को रोटेट करना है स्टूडेंट्स, इसका मास 5 किलोग्राम है, इसका मास 10 किलोग्राम है, तो where should I go for maximum external torque? तुम बोलोगे सर टॉर्क बी के अंदर ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इनर्टनेस है। क्यों ज्यादा इनर्टनेस है? क्योंकि सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ मासेस आर मोर। व्हाई नंबर ऑफ मासेस आर मोर? बिकॉज़ इट्स 10 किलोग्राम, दिस इज 5 किलोग्राम्स। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? तो ये ज्यादा इनर्टनेस ऑफर करेगा, द बॉडी को रोटेट करने के लिए मुझे ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हें 2 डिस्क देता हूँ, जैसे कि 2 डिस्क स्टूडेंट्स, एक डिस्क में देता हूँ, ध्यान से देखना, जिसका रिम पतला है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म मास थ्रू आउट। दूसरा मैं देता हूँ अ काइंड ऑफ दिस इज सिंपली डिस्क, ओके, व्हिच मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरा भी मैं डिस्क ही दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसको फ्लाईव्हील में बोल रहा हूँ, इट्स अ फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील का मतलब मालूम है कैसा दिख रहा है? हेड डिस्क जैसा ही, लेकिन हैव यू सीन द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन? फ्रेंड्स, हैव यू सीन व्हील्स ऑफ अ ट्रेन? ट्रेन के व्हील्स देखे? जैसे तुम सर्कमफरेंस की तरफ जाओगे, कहने से वहां पे विड्थ ज्यादा है, वहां पे मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, वहां पे मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, यहाँ पे मास कम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मुझे बताओ स्टूडेंट्स, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास
is far away from the axis of rotation, is far away from the axis of rotation, in that case, moment of inertia will be more or less more. मोर एक एग्जांपल और एक देता हूँ स्टूडेंट्स। ये एक बंदा है जिसको मैंने एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर रख दिया स्टूडेंट्स। इसके हाथ में मैंने डंबल्स दिए, दोनों 10 किलोग्राम के डंबल है, लेकिन उसने डंबल अपने he has hold it very close to his body. Exactly same person, same mass, same rotating platform, again same dumbbells, but now those dumbbells of 10 kilograms are placed far away. Students, कहाँ पे moment of inertia ज़्यादा होगा बताओ? Dumbbells placed far away, dumbbells placed closer to the body. Mass, square of the distance. यहाँ पे सर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सर ये डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, यानी ये मुझे ज्यादा इनर्शिया ऑफर करेगा, ये मुझे कम। अगर सपोज दोनों को मैं रोटेट करता हूँ, ध्यान से सुनना, दोनों को मैंने एक्सटर्नल टॉर्क दिया और दोनों रोटेट हो रहे हैं, स्टूडेंट्स व्हिच वन विल अंडरगो मोर रोटेशनल मोशन? बिकॉज यहाँ पे ऑफर लेस इनर्शिया, यहाँ पे इनर्शिया ज्यादा है। क्या ये क्लियर हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट? Students, is it clear? Yes, sir. So moment of inertia, students, moment of inertia of a rigid rotating body is defined as the algebraic sum of product of mass of each constituent particles and square of the distance of each constituent particle from the axis of rotation. This can be also written, agar ye mass continuously distributed, it can be integration of dm into r square also. R is a net we consider, so I can also write it as mr square. So moment of inertia can be written in terms of mr square also. Mass into square of the distance, यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे मास हुआ तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ। अभी तुम्हारे टर्म्स देखो, मासी योर टर्म्स, मासी व्हाट आर द टर्म्स? ये तुम्हारा फोर्स हुआ तो कहने से फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? कैन आई राइट टॉर्क, मास की जगह पे कहना पुट आई, एक्सेलरेशन के जगह कहना पुट अल्फा। फ्रेंड्स, इज इट गोइंग विद एनालॉग? है ना? देखो, mass measures inertia for translation. What is the inertia offered for rotation? Moment of mass, moment of inertia. This is linear acceleration, this is angular acceleration. Why? Because the body is undergoing rotational motion. क्या ये समझ में आ रहा है तुम्हें? Students, what is linear momentum? What is linear momentum? Sir, mass into linear velocity. So what is angular momentum? What is angular momentum? Say यहाँ पे m आएगा तो यहाँ पे I आएगा, यहाँ पे v की जगह पे क्या आएगा? ओमेगा आएगा। देखा, फॉर्मूला समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये सारे एनालॉग है, सारे एनालॉग है। वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर फोर्स, एंगुलर फोर्स, दैट इज कॉल्ड as torque. Mass is a inertness offered for a body for translational motion. Moment of mass or moment of inertia is the inertness offered for a body undergoing rotational motion and is simply defined as mr square. It's a product of mass of each particle and square of the distance from the axis of rotation. जितना mass ज़्यादा distributed हुआ away from the axis of rotation, moment of inertia उतना ही बढ़ेगा। और यहाँ पे देखो, अगर कोई बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, मोमेंटम कांस्टेंट कंजर्व्ड। अभी मैंने पूछा स्टूडेंट, ये बंदे ने, लिसन केयरफुली, ये बंदे ने 10 किलोग्राम के 2 वेट्स अपने बॉडी के नजदीक रखे और फिर उसको रोटेट करा, और इस बंदे ने 10 किलोग्राम फार अवे किया फिर रोटेट किया। मुझे बताओ स्टूडेंट्स, किसका ओमेगा ज्यादा होगा, किसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा? सर, इसने मास नजदीक रखा, उसका मतलब आर कम हुआ, आर कम होगा तो आई कम होगा, आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा। सर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगी, ये ज्यादा घूमेगा और ये कम। अरे हाँ सर,
Just now when I read the textbook also, तो वहाँ पे skating का example दिया था. There are people who are doing skating, ice skating and all, or ice dance we consider. So over there, a person has written in the books also, it was written that when a person undergoes an ice skating and the person starts rotating about of x-axis, first the arm and the leg of that person is far away. Then the person takes the arm and leg closer to the body. So the rotation increases. Then the person squeezes himself and sits down. Again, angular velocity increases. समझ में आया? Diving. Students, जब dive होता है Olympics के अंदर, when you go for a dive, what is the best dive? What is the best dive? When you dive, students, when you dive, you should have maximum number of somersaults. Okay, the rotation should be maximum. And when you move into the water, not even a single drop of water should spill out. Splash बहुत कम होना चाहिए, very small. वो accuracy होता है. उसको हम 9.7, 9.8, 9.9 तक का marking देते हैं. All the judges give that mark. Abhi, for example, somebody is going on a bench. Somebody is going onto a leaning bench. Okay, this is the bench. The person is standing over here. He jumps, and then he jumps himself. When he jumps himself, अगर वो अपना body को जितना ज़्यादा squeeze करेगा, उतना angular velocity ज़्यादा होगा. जितना अपना mass को बहुत नजदीक लेके आएगा, उतना angular velocity बढ़ेगा and have more number of somersaults. क्या ये clear हुआ concept? हाँ, students? तो देखो तुम्हारा भी आ गया. अरे हाँ सर, your force can be written as the rate of change of momentum. यहाँ पे torque can be written as rate of change of angular momentum. Yes, in order to keep the angular momentum conserved, total angular momentum conserved, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. जैसे तुमने यहाँ पे law of conservation of linear momentum 10th standard में पढ़ा होगा students, m1 v1 is equal to m2 v2. वैसे यहाँ पे क्या है, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. This is angular velocity conserved. Moment of inertia of the first body, angular velocity of the first body, moment of inertia of the second body, angular velocity of the second body. यहाँ पे इसका moment of inertia बढ़ा, इसका angular velocity कम हुआ. यहाँ पे इसका moment of inertia कम हुआ, तो angular velocity बढ़ा. The product all the time remains constant. Friends, are you all getting these points clear? Friends? Yes, sir. अगर suppose मैं लिखता हूँ students, the next formula if I have to consider work is given by the formula force into displacement. What's the formula for work over here? What's the formula for work? Torque into theta. देखो ना, Fs, torque into theta. Power is given by what? Force into velocity. Dot product. तो यहाँ पे भी power क्या होगा? Torque into omega. See, in analog I'm putting it. Rotational power, linear power. If I see what is the formula for translational kinetic energy, half mv square. तो यहाँ पे rotational kinetic energy का formula क्या होगा? m की जगह पे क्या आएगा? I. v की जगह पे क्या आएगा? v की जगह पे omega square. ये भी आंसर जूल में, ये भी आंसर जूल में. Power and watts, work is in joule. Students, समझ में आया students? हाँ students? What exactly are the linear kinematics you have come across? Students, what are the linear kinematics you have come across? V is equal to U plus ET. You have done in kinematics. V is equal to U plus ET. Rotational kinematics, man. Final velocity, angular velocity is equal to initial angular velocity. ET plus alpha t, acceleration. Second equation of motion यहाँ पे क्या था? S is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. यहाँ पे क्या होगा? S के जगह पे क्या आएगा? थीटा. ut का मतलब क्या होगा? Initial angular velocity into time. Half at square. Half alpha t square. Rotational kinematics. Third equation of motion. V square is equal to u square plus 2s. V square is equal to u square plus 2s. Omega square is equal to omega naught square 2 into alpha into. Are these kinematics clear? These are called as rotational kinematics. That's why I put forward under rotational and I put forward under linear. Once again, I'm summarizing it, students. Linear displacement.
linear velocity, linear acceleration, linear force, mass offering inertia for translational motion, linear force, linear momentum, force is rate of change of linear momentum, law of conservation of linear momentum, work done is F dot S for linear motion, power is F dot P for linear motion, translational kinetic energy, V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, E square is equal to U square plus 2S. Exactly इसी का rotational में कैसे लिखते हैं? Angular displacement, radian, angular velocity, radian per second, angular acceleration, radian per second square, linear force, angular force. This answer will be in Newton meter. Measure of mass we consider is the inertia offered. This is moment of mass, that is moment of inertia. It's an inert net offers for a body to perform rotational motion. It's the product of mass into square of the distance, therefore kilogram meter square is a unit. जितना मास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी कम होगा, प्रोडक्ट ऑल द टाइम रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे F is equal to ma, torque is equal to I into alpha, linear momentum is m into v, angular momentum is I into omega, linear force is rate of change of linear momentum, moment of force is rate of change of angular momentum. Law of conservation of linear momentum m1 v1 is equal to m2 v2. Law of conservation of angular momentum I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. अगर किसी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी कम होगा. स्टूडेंट्स एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. स्टूडेंट्स आई गिव यू टू एग्स. मैंने दो if I give you two eggs, students, in one of the eggs, students, it's boiled egg. Students, one is boiled egg. Both the eggs are exactly of same dimensions, okay? Same dimensions है. लेकिन एक boiled है और एक raw egg है. Students, दोनों को मैंने rotate किया. मुझे बताओ which one will have maximum rotations and why? Students, who will have maximum angular velocity? Is the question clear, students? There are two eggs I've given it to you. Both the eggs are exactly of same dimensions, but one is a boiled egg and the other one is a raw egg. And both of them are made to rotate about a given axis. Which one will have more angular velocity? Students? Of course, boiled one. See, Kirti gave an answer. Why boiled one? क्यों? क्योंकि boiled one के अंदर जो येलो कलर का योक होता है ना, वाई ऑयल के, वो एक्सिस के नजदीक होगा स्टूडेंट्स. यानी मास पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ टुवर्ड्स द एक्सिस. लेकिन रॉ एग होगा तो उसके जो फ्लूइड जैसे वो मूव करेगा तो फ्लूइड किस तरफ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा. स्टूडेंट्स, रॉ एग को तुम रोटेट करोगे तो अंदर का जो फ्लूइड है वो कहाँ की तरफ जाएगा? एक्सिस पर रहेगा या एक्सिस से दूर जाएगा? It'll go towards the circumference. If it goes towards the circumference, can I say more mass is distributed away from the axis? Moment of inertia of that Yes, sir. egg will increase. Moment of inertia of raw egg will increase. Angular velocity will decrease. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Are you understanding the concept of law of conservation of angular momentum? ये हुआ तुम्हारा work done Fs, work done torque into theta. Power is equal to force into velocity. Power is torque into velocity. Translation kinetic energy, rotational kinetic energy, rotational kinematics. Can I erase the students now? No, sir. Okay. Sir, when moment of inertia increases, then angular displacement decreases or increases? The angular velocity will decrease if moment of inertia increases. Angular velocity will decrease. Okay, Product all the time remains constant. I omega is a product all the time remains constant. अगर I बढ़ेगा तो omega decrease होगा, या I decrease होगा तो omega increase होगा. Product हमेशा constant है. जैसे linear momentum into linear velocity. अगर स्कूटर को लोगे तो स्कूटर का स्पीड हाई हो सकता है, अगर मैंने ट्रक लिया तो उसका स्पीड कम हो सकता है. कीपिंग लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट, है ना? Yes.
Can I erase now, students? Students, can I erase it? Yes, sir. This is something important, students. If the theory of this part, if you want to get your JEE, NEET, Advanced, the part of really good enough in that case, students, at the most, you should first cover with your board का. ये board का chapter होने के बाद में उसका फिर वो chapter शुरू होना चाहिए. Things becomes better for you to understand. Because when you know the basics properly, you are able to really catch up things more fast. Okay, students, now we go for, I told you about moment of inertia. Let us go for moment of inertia for certain symmetrical objects. Students. Okay. Suppose if I happen to ask you for a thin uniform rod, okay, moment of inertia passing through the center of mass, it's ml square by 12. That's the formula, students. Okay, moment of inertia for a thin uniform ring about an axis passing through the center of mass, and radius is r. Students, moment of inertia is equal to mr square. If I happen to go for a hollow cylinder, students, okay, the cylinder is hollow, radius is r. For this also, the moment of inertia will be mr square only, students. If I happen to go for a right circular disk about an axis passing through the center of mass, okay, it's a right circular disk, then moment of inertia will be equal to mr square by 2. These are all mathematical relations for moment of inertia. And see, everywhere you'll find out mass into square of the distance from the axis of rotation. If I give you a solid cylinder, and if I made to rotate about an axis perpendicular to its plane, then again for the M1, mr square by 2. If in case if I give you a hollow sphere of radius r, then moment of inertia about an axis passing through center of mass is 2 by 3 mr square. If I give you a solid sphere about an axis passing through its center of mass for solid sphere, moment of inertia will be equal to 2 by 5 mr square. If in case if I give you an annular ring, thickness negligible, radius r1 and r2, inner and outer radius, axis passing through its center of mass, students, then in that case your moment of inertia is equal to m by 2 into bracket r1 square plus r2 square. If I give you a rectangular plate, rectangular plate, thickness negligible, length is L, breadth is B. And if I tell you to find the moment of inertia, assume this is a kind of a bar magnet. इसको तुम bar magnet ले सकते हो, students. I don't know how many of you all have seen the magnet which is there in your labs. Laboratory magnet देखा students, तो एक टाइप का bar magnet जैसा दिखता है. Thickness इसका small होता है. Length is L, breadth. तो अगर मैंने पूछा what is the moment of inertia of such a rectangular plate, then moment of inertia is equal to m L square plus breadth square by 12. अगर यही rectangular plate को मैंने square lamina में ले लिया, students, square lamina, thickness negligible, sides are all equal. I want to find the moment of inertia passing through its center of mass. तो मैं क्या करूँगा? So my breadth becomes L. My breadth becomes L. L square plus L square क्या हो जाएगा? 2L square.
ये भी लेंथ एल है, ये भी लेंथ है। पहले तो लेंथ और ब्रेथ मैंने अलग लिया था, अभी मेरा ब्रेथ बन गया एल, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 2l स्क्वायर। व्हाट इज 2l स्क्वायर बाय 12? ml square by 6. If I happen to go for a solid sphere, solid cylinder, solid cylinder, and if I have an axis passing along the length, students passing along the length, this is radius r, length is l, then moment of inertia is equal to ml square by 12 plus mr square by 4. This is the moment of inertia we consider. If in case if I happen to go for uniform two cone students, uniform solid cone and uniform hollow cone. Suppose अगर मैंने इसको solid cone ले लिया about its central axis, and this I'll take it as a hollow cone about its central axis students. Then what is the moment of inertia about the central axis students? For solid cone students, the answer will be equal to what? 3 by 10 mr square. And this is the radius. And for hollow cone will be mr square by 2. Is this clear, students? These are for some geometrical shape objects, moment of inertia. So in the first formula, it is I is equals to ml square by 12. Yes. ml square by 12. L is the length of the rod. L is the length of the rod. It's a thin uniform rod. तो ये सारे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इट्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सबका यूनिट क्या होगा? किलोग्राम मीटर स्क्वायर. जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आ गया तो तुम्हारे स्टूडेंट्स को पूछेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन. फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या? रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट सिंपली डिस्टेंस. इसका यूनिट हमेशा मीटर में होगा. यानी अगर तुम देखोगे तो इजीली यू कैन कंसीडर इन टर्म्स ऑफ मीटर में होगा. इट्स अ डिस्टेंस स्टूडेंट्स. ये है मीटर और सेंटीमीटर नहीं होगा. स्टूडेंट्स, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है क्या? स्टूडेंट्स, अगर ये कोई भी मैं ऑब्जेक्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से सुना, जिसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो जितने भी कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स है सबका डिस्टेंस अलग अलग है. तो अगर सारे पार्टिकल्स का एवरेज डिस्टेंस में निकालूंगा ना, दैट इज के. तो व्हाट इज के? स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ गायरेशन इज एक्चुअली, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, इट्स एक्चुअली r1 square plus r2 square plus r3 square plus rn square upon number of constant particles. Means can I say it's nothing but root, ध्यान से सुनना, root mean square, root ये आया, upon n का मतलब आ गया mean square of distances of all the constituent particles from the axis, and that is k. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? k का मतलब क्या है? Students, radius of gyration is simply the sum of all the distance of all the constant particles. यानी इसका मतलब तुम्हें इसको और अगर अच्छी तरह से समझना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना. Everybody listen carefully. How do you consider this? Because many students radius of gyration के हिसाब से concept के लिए वो go crazy how to get it. Students, ध्यान से सुनना. अगर suppose मैंने solid sphere लिया, please everybody listen carefully. I've taken a solid sphere. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, can you tell me what is the moment of inertia about axis passing to the center of mass? तो इसका फॉर्मूला क्या है? solid sphere, हाँ सर ये है 2/5. फॉर्मूला क्या है? 2/5. तो देखो ये है रेडियस. अभी ध्यान से सुना, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या? लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स. सपोज अगर ये पूरे स्फीयर को अगर सपोज मैं एक पॉइंट मास पकड़ लूं, ओके, और ये जो पॉइंट मास है उसका मास ये स्फीयर के मास के बराबर है. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स,
I have assumed that the entire sphere is considered to be a point and the mass of that point is equal to capital M of the sphere. Then students, what about the distances of all the particles? What about the distances of all the particles of the sphere? तो तुम क्या बोलोगे उस डिस्टेंस को? सर वो जितने भी पार्टिकल्स का डिस्टेंस है वो सेंटर से आप उसको के पकड़ लो और के है क्या? के है क्या? सर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस r4 स्क्वायर प्लस r100 स्क्वायर प्लस r500 स्क्वायर rn स्क्वायर upon n within the root sign, and that is the radius of gyration. ओ यानी सर आप ये बोलना चाहते हो कि अगर पूरे स्फीयर का मास को मैं कॉन्सेंट्रेटेड एक पॉइंट मास ले लूं और उसको मैं कैपिटल एम ले लूं तो जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनका सबका मैं एक एवरेज डिस्टेंस ले लूंगा और वो हो जाएगा मेरा कैपिटल के. तो सर अगर मुझे किसी ने पूछा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट मास, what is the moment of inertia of this particular point mass? So what is my formula? My formula will be the mass of this particular point, which is equal to the mass of the sphere and square of the distance of all the constituent particles from the same axis. So can I say I is equal to mk square, I is equal to 2 by 5 mr square, and both the moment of inertia will be exactly the same. The moment of inertia of the sphere is exactly equal to the moment of inertia of the point mass. So can I equate 2 by 5 mr square is equal to mk square? So what's the value of k square by r square? The value of k square by r square for a solid sphere will be 2 by 5. अभी ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, k का वैल्यू देखो, क्या k का वैल्यू रूट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो k, यहाँ पे देखो k. अरे हाँ सर, k आपने रूट में लिखा, उसका मतलब ये होगा अंडर रूट 2 by 5, यानी पूरा एवरेज आ गया, कैपिटल आर बार आ गया. क्या ये क्लियर हुआ सबको? Is this clear? Radius of gyration का conception. So whenever somebody asks you what is radius of gyration, what will be your answer? Radius of gyration, students, it's the distance. It's a distance of a point mass from the axis of rotation where the entire mass of a body is supposed to be concentrated. And the moment of inertia of the point mass is exactly equal to the moment of inertia of the given body. This distance is simply called radius of gyration. Its unit is meter or centimeter. Is this clear? Students, is this clear to all of you all? Are you getting it? Concept of radius of gyration. Radius of gyration is defined as the distance of a point mass where the entire mass of the body is supposed to be concentrated, and it has the moment of inertia equal to the moment of inertia of the body. Or radius of gyration is also defined as the root mean square distance of all the constituent particles of that particular point mass from the axis of rotation. Also, the moment of inertia of the point mass is equal to the moment of inertia of the given body. So from here we can come to conclusion k is equal to root 2 by 5 by r. अगर मैं इसका आंसर निकालूं, सपोज मैं सारे देखो सबका मैं डिस्टेंस निकालूंगा एवरेज, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? root 2 by 5 r स्क्वायर का मैंने बाहर कर लिया था in terms of radius. I'm getting agree students? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ students? Since can I erase it?
So on one side, I've given you moment of inertia of all the bodies, and on the right hand side, I've given you radius of direction. Can I erase, students? Tell me yes or no. Yes, sir. Okay. स्टूडेंट्स अगर मैं सपोज इसी को मैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन में लिखूं, तो मैंने से I is equal to m r square by 2, can I say that is also equal to m k square? So what's the value of k square by r square for a hollow cone? 1 by 2. तो सबका वैल्यू मुझे मिल सकता है k square by r square. ये hollow sphere है. Can I say hollow sphere I is equal to 2 by 3 m r square? Can I say m k square? यानी अगर ये hollow sphere को मैं एक point mass पकड़ लूं, distance is equal to k, I can equate them. So what is k square by r square for a hollow sphere? 2 by 3. And it gets cancelled. If I give you a hollow cylinder, that is equal to mk square. What is k square by r square? 1 by 2. If I give you a sphere, which is equal to mk square, equating both of them, and gets cancelled. So what exactly k square by r square? 2 by 5. For a ring, can I say is equal to mk square, and gets cancelled. What is k square by r square for a ring? 1. What is k square by l square for a thin rod? 1 by 12. यानी I can take the entire object to be a point mass, लेकिन उसका एक्सेस वही रखूंगा. सपोज अगर ये हॉलो कोन है, तो पूरे हॉलो कोन को मैं एक पॉइंट मास ले लेता हूँ, उसको मैं एक डिस्टेंस के ऊपर रखूंगा. अगर ये पूरा कोन, तो वही बॉडी रिवॉल्व करेगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? एम के स्क्वायर होगा. वो पॉइंट मास हो गया. के क्या हो गया? एवरेज ऑफ ऑल द डिस्टेंस. अभी देखो ना, ये हॉलो कोन है, तो उसका मास तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है. इसका मास तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तो सबका मास के एडिशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का स्क्वायर ऑफ द square of the distance, तो क्या हो जाएगा? So that's what a student should keep in mind, that one can get the answer of k square by r square. And what's the reason for getting this? That I'll tell you. Why do I need to go for this? Why am I learning radius of gyration? To make my calculations more easier for rolling motion. इसके बाद वाला जो कंसेप्ट पकड़ता है वो रोलिंग मोशन होगा. वहां पे तुम्हें k square by r square बहुत अच्छी तरह से इफेक्टिवली यूज होगा. Okay. Now you have two important things to be taken care of, students. One is your theorem, and the last is your rolling motion. That will be the end of the chapter. Okay? The chapter will be over today. Now think carefully, students. Suppose if I happen to give you an object, and if I tell you to rotate this object, okay? Suppose if I give you an object in this manner. Thickness negligible, students. Please, everybody listen carefully. Yeah? I want you to rotate this particular object. So, कोई student बोलेगा, sir, can I rotate this object along x-axis?
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस हो सकता है, क्यों नहीं? आई कैन कंसिडर आई एक्स। हाँ सर, ये देखो ना पूरा, सपोज मैंने एक बुक दिया, तुमने बुक दिया, बुक को तुम रोटेट कर सकते हो, एक्सेस को वहां पे पास करके रख सकते हो, एंड यू कैन डू ऑल इट। फ्रेंड्स, क्या ये डायग्राम क्लियर हुआ? एक मैंने रिजिड लैमिना दिया है, थिकनेस नेग्लिजिबल दिया है, और एक्सिस मैंने पास कर दिया है, और कैन आई रोटेट दैट पर्टिकुलर बॉडी? यस, आई कैन रोटेट इट अबाउट अ गिवन एक्सिस। दूसरा स्टूडेंट बोलेगा सर यही बुक को क्या मैं ऐसा कोई एक्सिस पास करूं, ठीक है, और वो मेरा y एक्सिस हो जाएगा, तो कैन आई रोटेट इट अलोंग y एक्सिस? यस, व्हाई नॉट, आई कैन रोटेट अलोंग y एक्सिस। तीसरा बोलेगा सर यही बुक में एक उंगली पे रखूंगा, उसको रोटेट कर सकता हूँ, यानी व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू? इज ट्राइंग टू रोटेट अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट, यानी दैट विल बी अलोंग z एक्सिस, है ना? यानी एक ही रिजिड बॉडी को तुम तीन अलग एक्सिस से रोटेट कर सकते हो, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल थ्री? अगर किसी ने पूछा कैन यू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ऑल थ्री, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एक्सिस theorem. Perpendicular axis theorem. What is perpendicular axis theorem? Moment of inertia about an axis perpendicular to the plane lamina. Students, moment of inertia about an axis perpendicular plane lamina passing through the center of mass is equal to sum of the moment of inertia about two perpendicular axes, mutually perpendicular axis passing through the same point where the perpendicular axis cuts the lamina. Means, can I say Ix, Iy, Iz, all three are mutually perpendicular to each other. So Iz is equal to Ix plus Iy. This is called as perpendicular axis theorem. What is the statement? Moment of inertia about an axis perpendicular plane lamina, students, is equal to the sum of the moment of inertia of two mutually perpendicular axes. कहां से पास हो रहा है? Passing through a point where the perpendicular axis cuts the lamina. ये हुआ तुम्हारा perpendicular axis theorem. वैसे ही तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा। फ्रेंड्स, एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, अगर सपोज मैं कोई तुम्हें एक ऑब्जेक्ट देता हूं, सेम काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टेक द सेम काइंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, okay, suppose this is what a book is, or lamina, rigid lamina, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। लेकिन क्या मैं ये बॉडी को जरूरी है कि सेंटर ऑफ मास से रोटेट करूं? जरूरी नहीं है। अगर मैं चाहूं तो मैं यहां से भी तो रोटेट कर सकता हूं ना। I can rotate this particular entire body about this axis. तो अगर किसी ने मुझे पूछा कैन यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो सेंटर ऑफ मास का तो मुझे फॉर्मूला मालूम है। हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने फॉर्मूला दिया था, ये रेक्टेंगल पीस है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल पीस का फॉर्मूला क्या था? ये लेंथ था, ये ब्रेथ था, सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या था? क्या था? क्या था? ये था कि नहीं था? बाहर मैग्नेट का फॉर्मूला दिया था कि नहीं था? लेकिन ये एक्सिस कहां से पास हो रहा था? सेंटर से पास हो रहा था। क्या ये एक्सिस सेंटर से पास हो रहा है? नहीं। यानी स्टूडेंट, जरूरी नहीं है कि कोई ऑब्जेक्ट को अगर मुझे रोटेट करना है तो आई हैव टू मेक इट टू पास थ्रू सीएम। इट कैन पास थ्रू एनी अदर पॉइंट अदर देन सीएम। तो तुम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। So what is parallel axis theorem? So what is parallel axis theorem? Parallel axis theorem is, listen carefully. Take an axis, imagine an axis passing through center of mass. These two axes, listen carefully students. ये दोनों एक्सिस क्या है? ये I0 है, तो जो ये I0 है, ये पूरा हाथ है स्टूडेंट्स, ये पूरा हाथ है, हाथ का सेंटर ये है, तो ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। ये दोनों एक्सिस कैसे है? पैरेलल है। What is the distance between them? H. So now if I ask you, students, what is the formula for moment of inertia about any given axis? Moment of inertia about a given axis perpendicular to the lamina is equal to the sum of
the moment of inertia about an axis always passing through the center of mass of that body, always passing to center of mass of that body, and the mass of the entire body, and square of the distance between the two parallel axes. This is the formula for parallel axis theorem, and this is the formula for perpendicular axis theorem. Yani, a student who's wise and smart enough, how does he remember these mathematical relations? तो तुरंत उसका सोचना शुरू हो जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करना है तो जरूरी नहीं कि मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही हो सके। देखो ये देखो, आई एक्स आई वाई आई जेड तीन एक्सिस है, लेकिन तीनों सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, लेकिन तीन अलग अलग है भाई। एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इनका मुझे अगर रिजल्टेंट निकालना है तो आई जेड क्या होगा, आई एक्स प्लस आई वाई। So this is ix plus iy, that's your resultant, or all three mutually perpendicular. This is perpendicular axis theorem. Parallel axis theorem में क्या है, मैंने रिजिड लैमेला दिया है, इसका सेंटर ऑफ मास है, उसका फॉर्मूला मुझे मालूम था, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। लेकिन क्या मैं इस बॉडी को यहीं से रोटेट कर सकता हूँ? नहीं, जरूरी नहीं है, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, कहीं से भी करता हूँ, लेकिन अदर देन सेंटर ऑफ मास। तो भाई तुम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस is equal to the moment of inertia about the center of mass passing through an axis center of mass of the entire body, and square of the distance between the two parallel axes. Now based on this, suppose if I happen to give you some questions, let us understand that. Let us understand that part of it. Suppose if I happen to give you, listen carefully, suppose if I happen to give you a ring. Okay, a ring. V is everybody considered a thin uniform ring. Students, can you tell me what is the moment of inertia about an axis passing through the center of mass and perpendicular to its plane? Can you give me the formula for moment of inertia about an axis passing through center of mass and perpendicular to its plane? Do you know the formula? इसके आगे मैंने लिखा। Anybody knows it? Student? I is equal to mr square. Very good. I is equal to mr square. तो वो एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है? वो एक्सिस पास हो रहा है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर, तो इसको मैं z लूंगा स्टूडेंट्स, दैट इज mr स्क्वायर, रेडियस इज r। अगर मैंने एग्जामिनेशन में पूछा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, मैंने पूछा स्टूडेंट्स कैन यू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर ऑफ द रिंग, तो क्या करोगे? तो तुरंत तुम्हारा आंसर क्लियर होना चाहिए, तुरंत तुम्हारा दिमाग भागना चाहिए, अरे दिया तो है रिंग, यानी सोचो कि ये रिंग है स्टूडेंट्स, ये रिंग है, ये रिंग है ना, हमें ये वाला एक्सिस पता है mr स्क्वायर, परपेंडिकुलर वाला मालूम है स्टूडेंट्स, मुझे डायमीटर पूछा है, अरे हाँ यार, ये तो x एक्सिस हुआ, ये z एक्सिस हुआ, ये डायमीटर है, अगर मैं दूसरा वाला ऐसे रख दूं तो वो भी तो डायमीटर होगा कि नहीं होगा? हाँ स्टूडेंट्स, रिंग के ऊपर ये भी तो डायमीटर होगा कि नहीं होगा? अरे सर, यानी आप ये बोलना चाहते हो कि हमें पूछा ये, आप ये वाला भी ले रहे हो? अरे हाँ सर, ये तो x एक्सिस पे हो जाएगा, ये भी डायमीटर हो जाएगा y एक्सिस पे। अरे हाँ सर, परपेंडिकुलर एक्सिस में ले सकता हूँ, फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला iz इज इक्वल टू ix प्लस iy। iz क्या है? जो सेंटर से पास हो रहा है वो कितना है? mr स्क्वायर। ix क्या है? सर ix इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द डायमीटर। iy क्या है? सर iy भी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आल्सो पासिंग थ्रू द डायमीटर। पूछा क्या था मुझे क्वेश्चन? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर, so can I say mr square is equal to twice moment of inertia along the diameter? Therefore, what is moment of inertia along the diameter? mr square by 2. क्या ये clear हुआ? What did I use? I used perpendicular axis theorem. Students, clear हुआ how to use perpendicular axis theorem?
हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. अगर सपोज मैं डिस्क लेता हूँ, देखो ना, अब इस फॉर एग्जांपल 5 रुपए की कॉइन ले लो स्टूडेंट्स, 5 रुपए कॉइन ले लो, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स। This is center of mass. Now for this particular thing, uniform disk here. Students, now if I ask you, can you tell me what's the moment of inertia along the diameter? पूछा चलो, कैसे निकालोगे moment of inertia along the diameter? तुरंत तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि डायमीटर है सर्कुलर ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, तो सारे डायमीटर्स एक होंगे ना स्टूडेंट्स, सारे डायमीटर्स एक ही होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जितने की हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अरे सर उसका मतलब हमें ये आईडी पूछा है, तो सर इसको मैं ले लेता हूँ एक्स एक्सिस पे, दूसरा और एक मैं डायमीटर अगर मैं बना देता हूँ तो वो मेरा वाई एक्सिस पे होगा। और सर हाँ सर, परपेंडिकुलर वाला तो आपने फॉर्मूला दे दिया था इसके पहले। ओ यानी सर जब भी हमें क्वेश्चंस पूछते हैं तो इसके पहले वाला जो आपने फॉर्मूलाज दिया, क्या वो हमें लर्न करना है? यस, जितने भी इसके पहले फॉर्मूलाज मैंने दिए थे वो सारे सेंटर ऑफ मास से पास हो रहे थे और परपेंडिकुलर थे। वो सारे फॉर्मूलाज तुम्हें लर्न करोगे तो इसके आंसर्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये भी समझ लेना स्टूडेंट्स, वो सारे फॉर्मूलाज तुम लर्न करोगे तो इसका आंसर होगा। डू यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर? हाँ सर, ये तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, इसको मैं लूंगा आई जेड। इट्स अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, जिसका फॉर्मूला होगा mr²/2। ये तुम्हारा फॉर्मूला है। कैन आई यूज द फॉर्मूला? iz is equal to ix plus iy, एंड ये है mr²/2 is equal to ix is id plus this is also id. Totally mr²/2 is equal to 2id. What is the moment of inertia along the diameter? mr²/4। क्या ये क्लियर हुआ डिस्क के लिए? Is this clear students? In both the cases what did I use? Perpendicular axis theorem. Perpendicular axis theorem states that moment of inertia about an axis perpendicular and passing through center is equal to sum of the moment of inertia about two mutually perpendicular axes होना जरूरी है, mutually perpendicular होना चाहिए, और वो दोनों कहां से पास होना चाहिए? सेंटर से ही पास होना चाहिए। Therefore iz is equal to ix plus iy। स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ सबको? Students, is it getting clear? Yes, sir. अगर मैं पैरेलल एक्सिस की सिंपल लूं, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, can I give you a thin uniform rod? Yes, length is L. Students, what is the moment of inertia about an axis passing through center and perpendicular to the length? क्या है फॉर्मूला? ml²/12। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने एग्जामिनेशन में तुम्हें पूछा, ध्यान से सुना, मैंने पूछा फॉर अ थिन यूनिफॉर्म रॉड स्टूडेंट्स, कैन यू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन एंड? चलो, तो क्या करोगे? इसका डायग्राम इससे मैच करो ना, इसका डायग्राम इससे मैच करो। ये किसके लिए था सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट का मतलब क्या? अदर देन सेंटर ऑफ मास। क्या तुम रॉड को रोटेट कर सकते हो? हाँ कर सकते हो। ये देखो, अगर कोई मुझे ये रॉड देता है तो इस रॉड को आई कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, आई कैन मेक इट टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस। सी, now KVPY is giving an answer in this case. तो क्या होगा विदाकर? क्या होगा? यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो व्हाट्स द फॉर्मूला? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ गिवन एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग टू सेंटर। इन दोनों के बीच में ये h हो जाएगा स्टूडेंट्स। एंड व्हाट इज h? ये टोटल डिस्टेंस l है तो ये l/2 हो जाएगा। ना सी I0 इज इक्वल टू, ये क्या है? ml²/12 plus m into what is h? L²/4
Can I solve this? 12 is LCM, 4 3s are. So 3 plus 1, 4. What is my answer? ml square by 3. Is this clear? Is this clear, students? Is that clear, students? When to use perpendicular axis, when to use parallel axis. Parallel axis के लिए तुम्हें एक center of mass से pass होना चाहिए and it should be perpendicular. Can I erase this now, students? Students, can I erase it? Okay. This is what is your end of your topic, students. एक extra concept मुझे बताना है, students. Okay, listen carefully. Extra concept मुझे बताना है. I don't know about it whether they'll ask you for this or not. I don't know about that. छोटा सा concept है, students. Students, can you tell me, अगर कोई body rotate होता है, ध्यान से सुना, if a body is rotating and it's going translation also, what kind of motion is that called? Body rotating plus translational. What kind of motion is that called? Rolling motion. And students, this part of motion already I've done it with my students. When I was doing kinematics, I've given different types of motion to them. तभी मैंने rolling motion उनको बोला है. There are many students from the orange patch, but they're not able to answer. अगर कोई body rotate करता है और सीधा भी जाएगा तो that is rolling motion. Students, तो rolling motion है क्या? अगर मैंने पूछा what is kinetic energy rolling, ध्यान से सुना students, kinetic energy rolling, तो formula क्या है? Are you getting it? Kinetic energy rotational plus kinetic energy translational. What is the formula for rotation kinetic energy? Half I omega square. What is the formula for translational? Half mv square. ये ध्यान में रखना. कोई भी body, for example, suppose मैंने कोई inclined plane लिया, students, मैंने कोई inclined plane लिया और कोई object को मैं यहाँ पे release कर रहा हूँ, okay? और friction है, body spherical है, तो क्या होगा? Body roll भी करेगा, यानी rotate भी करेगा और सीधा भी जा रहा है. तो rotate करेगा तो उसको कौन सी energy होगी? Rotational kinetic energy. देखो, half mv square, half I omega square. ये कौन सी है? Kinetic energy rotational plus kinetic energy translational. Summation of these two is called kinetic energy rolling. ये ध्यान रखना. Agreed? So rolling motion is always summation of what? Translational plus rotational. Is that clear, students? Sir, and for potential energy, the G will be a component of that. Yes, G sin theta. Mg sin theta will be the force down the inclined plane. And the Okay. acceleration on the inclined plane will be simply G sin theta. Okay? Okay, students? Yes. So you can go through your formulas, okay, and go on in consistent revision. Okay? Chalo, we'll wind up the sessions, okay? Thank you, sir. Most welcome.